Hey guys, तो today let's see what these bioactive compounds are. So हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. In first part, let's see what are the bioactive compounds, and then let's see what are the mechanisms, like how they work inside our body, and next let's see how they are extracted, isolated and characterized. So this is our first part, and in second part let's see the bioactive compounds from marine actinomycetes, and finally in the last part let's see what are bioactive compounds that have been isolated from microalgae. So to understand all these, let's see what bioactive compounds are. सो बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स, सी इनके नाम में ही लिखा रहा है कि बायो मतलब लाइफ एंड एक्टिवस इन द सेंस दे हैव सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, दे शो सम काइंड ऑफ एक्टिविटी. दीज बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स को हम अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दीज आर सर्टेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. तो आप सभी जानते होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ साइकिल मतलब ग्रोथ कर्व. सो दिस यहाँ पे ऐसा रहता है ग्रोथ कर्व, और दिस इज़ द स्टेशनरी फेज जहाँ पे इनकी ग्रोथ नहीं होती. ये सर्वाइव करते हैं बट ग्रोथ नहीं होती इनकी. सो इन दिस फेज दीज बायोएक्टिव कॉम्पाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड. सो क्यों प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम पे? बिकॉज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लाइक ये उनको कंपटीशन में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं, अट्रैक्शन एंड सिग्नलिंग. सपोज एक मीडिया है, उसमें बहुत सारे कम न्यूट्रिएंट्स है एंड दे हैव टू फाइट फॉर दैट मीडिया. सो इन दैट केस दे प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. फॉर एग्जांपल फंगाई प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ inhibit the growth of certain bacteria. So the secondary metabolites are useful for the microorganisms in this way, but they are also useful for us as well. तो हमें कैसे यूज़ होते हैं ये? See, they have certain antioxidant property, anti-carcinogenic in the sense anti-cancerous, anti-inflammatory property और antimicrobial properties भी होते हैं इसमें. So some of the examples for secondary metabolites देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स, पिगमेंट्स, पॉलीफिनॉल्स, पेप्टाइड्स और बहुत सारे हैं जो हम आगे देखने वाले हैं. So next let us see what are the potentials of these bioactive compounds. See, there are many. I have listed only few. So first it's antibacterial potential. मतलब they have the ability to inhibit the growth of other microorganisms. For example हमारे पास एक bioactive compound है लोबोफोरिन. वो we extract that from streptomyces species and it is effective against bacillus thuringiensis and staphylococcus aureus. और एक ऐसा एंटीबायोटिक है जैसे कि लाइकोपीन, आप देख सकते हो, दैट इज़ हैविंग एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल एंड वी हैव आइसोलेटेड इट फ्रॉम एन मराइन algae दैट इज़ डुनालिएला सैलिना. ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या रहते हैं? आपने एप्पल को देखा होगा कि अगर आप एप्पल को कट करेंगे और ऐसे हवा में एक्सपोज करके रखेंगे तो दैट विल इवेंचुअली टर्न ब्राउन, राइट? दैट इज़ ओनली ऑक्सीडेशन, मतलब वो डैमेज होता है सेल्स. So in the same way in our body as well ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता रहता है. ओके, सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रोकने के लिए हमारे पास कोई एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए. सो एप्पल को ब्राउन होने से हम कैसे सर्वाइव बचा सकते हैं? लाइक वी आर हैविंग सिट्रिक एसिड फॉर दैट. अगर आप लेमन को उस पर स्क्वीज़ करेंगे तो दिस सिट्रिक एसिड विल एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड दिस विल प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट एप्पल. इन द सेम वे हमारे बॉडी में भी अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स को डालेंगे तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जैसे कि हाइड्रोक्सिल होता है, सल्फर, बहुत सारे हैं. सो ये व्हाट दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट. ओके, सो नेक्स्ट पोटेंशियल इज़ एंटी लार्विसाइडल. हमारे बॉडी में आप जानते हो कि बहुत सारे राउंड वर्म्स होते हैं, हुकवर्म्स होते हैं, तो इनके लार्वे ऑब्वियसली प्रोड्यूस होते रहते हैं. तो देर आर सर्टेन बायोएक्टिव compounds like anthracene. It is produced from nocardia and this is effective against the larvae of Aedes aegypti, culex, etc. These are mosquito species. Okay, and next let's see what are anti-inflammatory potential. Anti-inflammatory मतलब sometimes our immune system gets so hyperactive that it fights against our own cells. तो हमें हमारे cells को बचाना है.
तो इस वक्त में भी बायोएक्टिव कंपाउंड्स काम आते हैं, एंड एग्जांपल फॉर दैट इज़ लेक्टिन. इसको हम ग्रीन वीड कॉलरपा क्यूप्रेसॉइड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज एंटी कैंसरस, लाइक इट इज़ effective in treating cancer. So one example for that is ordamycin. So let us see what are the mechanisms involved here. Anti-angiogenic, anti-proliferative, anti-metastasis, cell cycle arrest and induction of apoptosis. तो आप सभी जानते ही होंगे कि कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सो दिस बायोएक्टिव कंपाउंड्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट काम करते हैं. लाइक cancer cells are having angiogenic properties. In the sense, angiogenesis is the process where new blood vessels are formed. Thereby, they provide oxygen and nutrition to the tumor cells. In the same way, anti-proliferative. You all know that cancer cells have a high rate of proliferation, that is, they divide rapidly, causing destruction. In the same way, these bioactive compounds वर्क अगेंस्ट दैट, हेंस दे आर एंटी प्रोलिफरेटिव. और उसके बाद मेटास्टासिस इज स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल फ्रॉम वन साइड, दैट इज प्राइमरी साइड, टू द सेकेंडरी साइड. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अभी एक कैंसर हो गया है बोन में, सो that cancer has the capability to transfer to some other part of the body, like it may cause breast cancer also eventually. So here our primary site was bone and secondary was breast. Next, coming to cell cycle arrest. We all know that cancerous cells have the capacity to surpass this cell cycle. So these antibiotic compounds are having this property that they are able to arrest the cell cycle and repair the damage there itself, so that the damage is not spread further. And next is induction of apoptosis. Apoptosis is the property of a normal cell. Like if there is any damage within the cell itself undergoes for destruction by the help of certain proteins called caspases. So induction of apoptosis, these bioactive compounds, these cancerous cells are not having this apoptosis property, so bioactive compounds induce that property so that the cancer cell gets destructed. Okay, so this was the mechanism in cancerous condition. And next, let's see antimicrobial condition. Antimicrobial, that is, they are lethal or they inhibit the growth of the other microorganisms. How exactly? तो इसमें mechanisms जो दिए हैं मैंने, it takes place by this way. First one is by cell membrane damage. We all know that bacteria is having cell membrane, cell wall एंड कैप्सूल. तो बहुत सारे बैक्टीरिया कंपाउंड्स रहते हैं जो डैमेज द सेल मेम्ब्रेन, देयर बाय द सेलुलर लीकेज होता है सेल में से, एंड देन इट इंटरफियर्स विद द डीएनए सिंथेसिस, एंड उसके बाद block the synthesis of bacterial peptidoglycan. We all know that bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, and there are certain antibiotics like penicillin which has the capacity to block the synthesis of these peptidoglycans. And then there are certain antibiotics which prevent the transcription and translation. For example, we have streptomycin, which prevents the binding of 30th subunit to the larger subunit of the ribosome during the translation. So the translation process is stopped there itself. And here is the brief outline of how these are extracted, isolated and characterized. So first thing is we have to isolate them from the organism's body by certain mechanical methods or chemical methods. And once we have got that compound, we have to go for purification. To purify it, we can go for TLC method, that is thin layer chromatography. Then we may also go for column chromatography or HPLC as well. And next, after this, we'll get a pure compound. The pure compound is next taken for structure elucidation. We will study the structure, what are the functional groups attached to it, what are the active sites present in them, and then we will go for biochemical characterization. There we will study what are the biochemical characteristics of that bioactive compound, and again in biochemical characterization we go for toxicity assay, how they are toxic to the cells,
do they cause any cell deaths, and in vivo evaluation they are introduced into certain living organism and there they are studied, and finally clinical studies then done, and then the approval of the bioactive compounds is done. So this was all about bioactive compounds, their mechanisms and their extraction. See you tomorrow in the next video. Bye bye.